अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स, जो कि कंटिन्यूएशन होगी हमारे प्रीवियस टॉपिक की। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेसन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक एलिमेंट्स, which is the part of basic definitions from chapter number 1, fundamentals of chemistry. And in elements we have discussed so far brief history of element, then we discussed modern definition of elements, then occurrence of elements, and then we started classification of elements. In previous class we have discussed classification of elements on the basis of their physical states of matter, and in this lesson we are going to discuss in detail classification of elements on the basis of their properties. And if we classify elements on the basis of their properties, so we have three classes: metals, non-metals and metalloids. आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे इन तीनों में फ़र्क क्या होता है और सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल्स। जब मैंने वर्ड मेटल बोला होगा तो आपके दिमाग में कुछ सिक्के या फिर कुछ फ्रेम्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनकी सरफेस कुछ शाइनी होती है और जिनको अगर आप खटखटाएं तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ आती है। अगर हम बात करें मेटल्स की तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेटल की ये है कि मेटल्स की सरफेस शाइनी होती है। मतलब अगर आप उसे देखें तो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्यूमिनियम मेटल को देखें जो कि आपके क्लासेस के वाइट बोर्ड के फ्रेम्स में यूजुअली होता है, तो उसकी सरफेस थोड़ी शाइनी होती है। आपने अपने कुकिंग में एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ की होगी, किचन में अक्सर ये इस्तेमाल की जाती है। सो एल्यूमिनियम फॉइल की सरफेस भी शाइनी होती है। अगर आप नए सिक्के देखें तो नए सिक्कों की सरफेस भी शाइनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली मेटल्स शाइनी होती हैं इफ़ दे आर पॉलिश्ड। लेकिन अगर मेटल्स ज़्यादा देर तक पड़ी रहें तो फिर उनकी वो शाइनिंग ख़राब हो जाती है और हम कहते हैं कि मेटल की सरफेस डल हो गई है। बेसिकली वो मेटल की वजह से नहीं होता, किसी और कंपाउंड के लिए मेटल के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उन्हें मेल्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आपके कुकिंग यूटेंसिल्स ज़्यादातर मेटल से बने होते हैं। हम उन्हें इतनी देर तक खाना पकाते हुए इस्तेमाल करते हैं मगर वो फिर भी मेल्ट नहीं होते। इसके अलावा मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल भी होती है। मैलिएबल मतलब हम उसको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसे अपनी मर्ज़ी से मोड़ सकते हैं। इसीलिए मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी टर्न्ड इनटू वायर्स। तो आपने कभी रबड़ की बनी वायर देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि रबड़ को वायर में ढालना बहुत मुश्किल है और वायर्स ज़्यादातर मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। और metals are good conductor of heat as well. That's why they are used in cooking processes. अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात देखें तो एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब की सब मेटल्स हैं। लेकिन मेटल्स हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं? मेटल्स हमारे लिए इतनी अहम इसलिए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स बेसिकली जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो मेटल्स ही हैं। और मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। हमने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स डिस्कस की आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑल ऑफ देम वर सॉलिड्स। लेकिन एक एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करती है, विच इज़ मरकरी। मरकरी इज़ एन एक्सेप्शनल मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, एंड mercury is of silver color metal, and you have seen mercury in your thermometers as well. So mercury is an exception which is liquid. So mostly metals are solid except mercury. If we look at non-metals, so of course they are going to be opposite of metals. If metals were shiny, so non-metals, their surface is dull. And non-metals can exist in solid, liquid, gas, all states. Some non-metals are solids, some are liquids, and some are gases. The melting points of non-metals, they are very low. Like plastic, it's a non-metal, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। Non-metals, they are brittle as well. Brittle means कि वो टूट जाएंगी बहुत आसानी से, ज़रा सा आप उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगी।
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी या तो पास नहीं करती है, अगर पास करती है तो बहुत कम मिकदार में करती है, एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल। एग्जाम्पल नॉन मेटल की गैसेस में देखें तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दीज आर नॉन मेटल्स. If we talk about bromine, it is a liquid non-metal, and if we say carbon, it is a solid but non-metal. But metalloids, they lie somewhere between metals and non-metals. Lie between means they possess some properties of metals and some properties of non-metals. There are only few metalloids, very few metalloids, which possess properties of both metals and non-metals. For example, metalloids, they are moderate conductor of heat. Means they're not good conductors, they're not very bad conductors, but just moderate conductors of heat. And examples of metalloids are silicon, germanium, and arsenic. Let's have a look at this table. You can see the classification, both types of classification written in the form of table. You can easily find examples for solid, liquid, and gas state of elements, and metals, metalloids, and non-metals. In this table, you can see that non-metals, they exist in solid, liquid, and gas, all states of matters, and metals, they exist in usually solids, but mercury is a liquid metal. And if you say metalloid, so they exist in solid form. Now, one question should arise in your mind, where we can find all the elements. क्या हम अपने इर्द गिर्द इन एलिमेंट्स को तलाश करते हैं? क्या साइंटिस्ट ने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया? तो घबराने की जरूरत नहीं है. The scientists have worked so hard and they have figured out all the elements and their properties. So all the elements that have known so far, they are arranged in the form of a table, this beautiful table. And this table is called as periodic table. In periodic table, scientists have classified and they have arranged elements according to their properties. We will discuss in detail periodic table in our next lectures as well. But here, the purpose of this picture is, you can see this blue color represents metals. Can you find blue color in a large area? Yes. So we can say that most of the elements that are present around us, they are metals. And you can see only few of them are metalloids. And yes, not you can say very less, but yes, as compared to metals, non-metals are very less in number. Yellow color is representing non-metals. But stop here. Can you see something different in this table? You can't see the names clearly, isn't it? There are some alphabets that are used instead of names. So, what are these alphabets? These are called as chemical symbols or chemical shorthand. Since many of the names of the elements, they are very complicated. So, we need a chemical symbol, which is a chemical shorthand to represent each element. And we call this shorthand as chemical symbol. There was a scientist, Jacob Berzelius. He was a Swedish chemist who introduced first the idea of chemical symbols. So he gave the modern symbols to the chemicals. And not only the symbols, he also discovered elements such as selenium, thorium, and cerium. So he is very important scientist in the history of chemistry. So why you will see some single letters and some of the boxes they are showing you two letters. Why is this so? Do you know how many alphabets are in English? So in English language, there are only 26 alphabets and we have more than 100 elements. So do you think it is very easy to represent one element with a single letter? Of course not. So scientists have figured out some solution for this. So they have assigned some rules for writing symbol. Rules are, symbol could consist of one letter or two letters. This phrase clears one thing, that symbol can never consist of three letters. मतलब symbol या तो एक single alphabet होगा या फिर two alphabets होंगे. अगर three alphabets combine लिखे हुए हैं साथ साथ, for example LIE. So LIE, एक चीज clear है कि this is not the symbol of anything. How and why? Because LIE consists of three letters, and according to the rule of symbols, symbols can either consist of one letter or two letters.
Okay, so if one letter, then it would be always capital. Now, what if a symbol consists of two letters? If a symbol consists of two letters, then the first letter would be capital and the second letter always would be written in small. So first letter capital and second small. Now, question here is, will the letters always the first letter or the first two letters? Do you think it will work? For example, we have two names, calcium and cadmium. Now, both are starting with C and both are starting with Ca. Means if you try to write one with C and one with Ca, so you will get confused, isn't it? So this confusion will be cleared by the next rule. So next rule is, symbol could be, if it is first letter, it would be first letter. Like if it comprises of one letter, तो वो होगा word का just पहला letter, नाम का पहला लेटर. मगर अगर आप ले रहे हैं दो लेटर्स वाला सिंबल, तो उसके लिए आप पहला लेटर कैपिटल जो होगा वो फर्स्ट लेटर होगा, मगर जो सेकंड लेटर होगा वो कोई सा भी लेटर हो सकता है उसके पूरे नाम में से. यस, लेकिन यहां देखते हैं एक मिसाल को. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग दैट सोडियम. आई होप यू हैव हर्ड दिस एलिमेंट सोडियम बिफोर. सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, but sodium starts with S and there is no Na in the whole name sodium. So from where this Na is here? So don't get confused. Students, it's so simple. We are not always using English names. Sometimes we use Latin names for some elements. Yes, Latin names. Previously, all of the work on elements is done by Latin scientists, so mostly things are having their name in Latin. So for some elements, we derive their names from their Latin names. Like sodium, it is not from sodium. The Na is not from sodium. It is from the Latin name of sodium, which is natrium. Same in the case of potassium, it's not P or PO or PA or PT. It is K. K is from kalium. Cu, which is copper, it is not Co. Look, copper. First thing will come in your mind, okay, copper, COPPER, this is copper, but its symbol is Cu. You cannot find U in the name of copper. So it is from the Latin name of copper, which is cuprum. है ना बहुत आसान? Gold, symbol is Au and it is derived from the Latin word aurum. Iron, Fe, and it is derived from the Latin word ferrum. So I hope कि symbols को लिखना आपके लिए clear हो चुका होगा. So अब हम देखते हैं कि by looking at the symbols आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ element है या नहीं है. So rules आपको याद रखने हैं. क्या है rule? First rule is either one letter or two letters. If one letter, it should be capital, and if two letters, first would be capital and second would be small. So look at this example. Capital C and capital O and capital C and small o. Which one is an element? Can you differentiate? I hope all of you can differentiate. Capital C and small o, this is the symbol for cobalt. And capital C and capital O, it is not symbol for anything. It could not be a symbol. Why? Because one symbol cannot consist of two capital letters. So students, आज के इस लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और हमने डिस्कस किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी एग्जाम्पल्स. इसके अलावा हमने डिस्कस किया सिंबल्स एंड वी हैव लर्नड रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स. और आई होप अब आपको लेटर्स को देख के ही पता लग जाएगा कि ये किसी एलिमेंट का सिंबल है या ऐसे ही इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा हुआ है. अगली क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी को. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.